First of all, the surrounds in if you go to any friend circle or marriage party, if you tell somebody I am investigator, वो दो कदम सोच के पीछे हट जाएगा, क्या बोल रहा है, क्या चीज, पहले सोचिए इन्वेस्टिगेटर है क्या पूछता है, क्या करते हो, what you do, then it comes a detective. When you speak detective, then he again go back to first step back. So what happens? We are seeing the movies basically James Bond or किताब जैसे पहले विजय वह सा आता था. We are dreaming on that life. There might be detective something like James Bond. Yes, there are levels which people are doing, just like government or all and there. But our situation is something different. We are basically helping people to solve their issues. Old time, when there is a marriage proposal goes to some anywhere, people ask to their relatives, please find out about the girl or boy. Okay? Because they don't like to disclose themselves that they want to know, but still they want to know. So this is also one type of detective. But slowly, earlier the marriage was happened in the family circles, nearby village. But when the modernization came into somebody staying in Bangalore, marrying somebody in Chennai or Delhi or abroad. So then challenge comes how to find out the facts. So what happens? Then some business-minded people or some retired police officers, they come out and find out some solutions. Okay, we will find out and give you reports. I don't know how to justify their work. Sometimes after investigation also you find the marriage does not continue good. Then they go to the person and ask you, sir, you have given this report, we agreed for the marriage, but now they are insurance. Nobody knows future. So as an investigator, I never ever give any assurance that my report will give you a lifetime solution for a problem. If you have doubt, you just solve yours. Nowadays, where problems comes, everybody, when there is a problem, so people go to the solution, find out solutions. Where there is money, there is investigation. Wherever money involved, money, you just look, close your eyes and feel. Where there is money involved, investigation. Fraud customs in India, basically. जहाँ पैसा है वहाँ fraud की थोड़ा बू लगती है. यहाँ कुछ problem है. Something wrong. Whether you are insurance, whether banks, loans, car loan, anything you talk, you will find there is a problem. So looking into that part, slowly few agencies started working. First they worked individually, then was a group. But till now, some are telling I am working since 40 years, 50 years. Yes, they are individually doing, they are very successful, big agencies. But what exactly this field got any approval from the government? Does this field got any approval from any of the authority or court, anywhere? Nowhere. On record, I am telling nowhere. Yes, some parts are allowed. Earlier, tried to put security and detective services together as a bill, but interestingly, security agency bill passed, detective dropped. And detective and security both are different fields. I don't understand why people mix both of them. When you are talking about detective, it is not approved, very frankly, but with certain terms and conditions, it is approved. Like we are doing insurance investigation, many were there, it is approved. Here you do not work as an individual insurance investigator, you are working on behalf of an insurance company. They provide you authority letter. That authority letter only precises to that particular case only. You are not working for yourself. You are just temporary employee for insurance company to do that job. They are not hiring an insurance investigator company. No. They give authority to you. Similarly, if you go in corporate, I don't know many of you are doing work in the corporates. There are so many types of frauding happens in corporate.
First, employee. HR companies they do verification, but company nowadays doing screening of each and every employee, where majorly they are dealing with the finance, if they are dealing with the vendors, or any monetary transaction they are doing with the company. So they start working to find out the background of the person. What he is doing in last company, at least 4 to 5 companies they are trying to find out. That is employee verification. Sometimes company gives authority letter, sometimes they don't give. So it is, when they don't give, it's very difficult to prove anywhere, okay, I am doing working there. Then you have to do it secretly. Then comes banks and financial issues. Nowadays, loan defaulter, that is a bigger NPA nowadays happening in the bank. You can see lots of NPAs are there. So banks try to hire law firms, advocates, but advocates cannot do everything, neither law firm can do anything until they find the person who has taken the money. So then investigation starts to find out the person where he is now, so that they can recover the money. Second comes, before giving the loan also, they have to start working. If you go to the music industry or film industry, earlier it was piracy. Nowadays copyright issue was coming, there is something IPR, many are doing, there is copyright. Product, there is there. So if you look everywhere where there is a transaction of financial matter, there is a chances of fraud. When there is a chances of fraud, investigators are required. Now what is the challenges with us? First, our investigators are not much qualified. Somebody tells I am a graduate, I am submitted something, I am not talking about the motor insurance basically. Please don't misunderstand me on that person. Because I don't have much experience in motor insurance, they are qualified enough for that. I am talking about insurance investigators. Taking one by one step. First starting with the insurance sector, major are the insurance segments. Is there any training institute have you attended? No. Is there any training institute available in India? No. Nowhere there is a way to train you for how to do insurance investigations. What is the process? You join an insurance company, any investigation agency, they will send you somebody to go to the field, do the work, understand, due to experience only. No way give you a proper stay. That's the first problem. Second problem, like when insurance company issues the insurance, there is always an insurance advisor who is registered, who gives some exams, they got a code. But what about the insurance investigator? They don't have anything. When issuing insurance, you have an advisor, everything. When you are doing investigation, you don't have. We'll discuss on this part a little bit later on this. I have something in my mind, I also have to share with you. For this topic, from 2010 onwards, I approached many insurance companies. Might be many are aware about the Ganesh Nair was in Kota. So many, I forgot the name. Dr. Gandhi was in Max. I talked with many. I gave them an idea to them how they can regularize or make a system to find out the right investigator. They told us we don't have that capacity, but if you say you go to IIT and do it. Even I am telling you in 2013, I personally with a group of people approached to IIT. They rejected. No reason. Rejected. Then I talked to make a gather, many people, many investigators, but nobody came to the picture. Many saying we are busy, we don't have time. Or any day that discussion dropped. But insurance companies adopted that planning. Nowadays what happens? Suppose an insurance claim from Aviva, they share these claim details with other companies, they have internal system. And automatically who has this claim, even if you are submitting an investigation report to Aviva or Max or any other company,
they have internal system, they share not only complete report, if it is negative, they don't show the document, they only say this is a no claim and share with other companies. If they share, then they internally have some payment systems and they decide among themselves. This is a very big challenge that we are doing. Many people are, completely full-fledged professional on it, but you don't have any license or any code, nothing. If as an association we can start working on this segment, it will be a wonderful thing. I have a roadmap for that. I'll definitely share with you. If we agree, then we can proceed accordingly. Complete roadmap is ready. And now technology is very big. We can do that. And second challenge comes honesty. Many complaints come to the company owners that your investigator is taking money. Honestly speaking, please don't disclose this thing out of this box. It is very much easy way for an investigator to take money, but I am not telling that investigator taking. I am rather say the persons, family members of the insured, they approach, take this money and give a report. जब सामने थाली में पैसा परोस के दिया जाता है ना, बहुत लोगों की नियत बदल जाता है। 100 में से 99 को यही गिर जाए, मैं मानता हूँ। बहुत ईमानदार बनाओ, कोई तरफ डट गया है, ठीक है? अच्छा, मैं आपको छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ। नाम नहीं लूँगा इन्वेस्टिगेटर को, मेरी कंपनी में था 2008 में। मेरे पास एक बार एक मैनेजर के पास फोन आया, सर एक सीबीआई अफसर आया है इन्वेस्टिगेशन करने। 2008 की बात है, बिहार का बंदा था। प्लीज बिहार में जो बुरा मन मानेगा, मतलब जो बिहार में था, दिल्ली में से काम करता था। सर वो उसने कहा कि सीबीआई अफसर इन्वेस्टिगेशन करने आपकी कंपनी का वेरीफाई करना चाहते हैं, देखिए। तो मेरी मैनेजर तुरंत मुझे मैसेज किया, सर ऐसे कोई सीबीआई अफसर को दिया हमारी कंपनी से, वहाँ पे क्या करें, हमें डिटेल लो। डिटेल दिया गया उसकी। उसने ना एक नकली आई कार्ड सीबीआई वाला छुपा रखा था और एक एम्बेसडर गाड़ी में बैठ के जाता, टाई सूट पूरा पहन के बिल्कुल ऑफिसर करा और डरा धमका के और अकाउंट में पैसा भी दे दिया है। अपनी 2-3 अकाउंट में पैसा भी डला है व्हाइट में। आपकी कोइंसिडेंस, 6 साल की जेल में मेरी कंपनी ने उसको सजा करवाई, मतलब लीगली उसको एक्शन लिया गया, सजा करवाई। एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, इसमें उसने कहा कि सर वरना लोग ना बता नहीं होते, इसलिए मैंने ये कहा कि मैं केस सॉल्व करने के लिए झूठ बोला, मुझे पता है, बट उसकी नियत खराब थी। हम पास क्या ऐसा कोई सिस्टम है कि हम किसी को इन्वेस्टिगेटर रखते हैं ये पता करने के लिए वो ऑनेस्ट है नहीं है, क्या गारंटी वो फील्ड में जाके नहीं करेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिविजुअल हैं और उनके पास 10-15 लोग काम करते हैं, मैक्सिमम ऐसे ही होंगे। किस तरह, व्हाट इज द सिस्टम विथ यू टू चेक? एक्चुअली मेरे पास जो 108 एम्प्लॉइज है, वी नियर टू 2000 केस इन इन्वेस्टिगेशन। हमारा सिस्टम ऐसा है कि कंप्लीट एंड टू एंड ऑर्गेनाइजेशन है, पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशन है जो एप्लीकेशन पे चलती है। हमने क्या किया है कि हमने ऑब्जर्व किया है कि जब इन्वेस्टिगेटर जाता है तो क्लाइंट को कॉल करता है कि सर मेरे को मैं आपके घर को आना है या नहीं मिला है, उसको कॉल करता है। उसके बाद क्या हो रहा है कि जनरली मैं ऑब्जर्व किया हूँ, तो उसके बाद क्या हो रहा है, जब इन्वेस्टिगेशन, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर लगा है मोबाइल पे, फ्रॉम इन्वेस्टिगेटर गेट से स्टार्ट होएगा, जब से वीडियो रिकॉर्डिंग होएगी वो बाहर आने तक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग हम सेव करते हैं। फर्स्ट पॉइंट उसमें हो गया। सेकंड पॉइंट ये था कि अगर इन्वेस्टिगेटर क्लाइंट के पास जा रहा है, जाने पर फोन करता है। अब इतने बार भी इन्वेस्टिगेटर को बताया कि सेम फोन नंबर मत यूज करो कि जो कॉल करते हैं उसको क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर आ जाने के बाद उसका फ्रेंड डालता है 1500 या 2000 रुपये। जब क्लेम रिजेक्ट होता है होने के बाद उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि उन्होंने पैसे लिए। हम उसको देखते हुए हमने क्या किया, हमारा एप्लीकेशन में क्लेम जनरेट होने के बाद एक कॉल बटन है, उसमें कॉल दबाने पर क्या होता है, फर्स्ट कॉल मेरे इन्वेस्टिगेटर को मोबाइल पे कॉल आता है, नेक्स्ट जो नंबर हमने एंट्री किया
क्लाइंट को कॉल जाता है, जो बीच में वर्चुअल नंबर चलती है दोनों के बीच में, जो कॉल होती है वो हमारे सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड होती है, पूरा कॉल रहता है एंड टू एंड। उससे क्या हुआ है कि हमारे पास जो ऐसे अगर कल के दिन कुछ भी क्लाइंट को बोल दिया, उन्होंने पैसे लिया हो बोले, तो उसके बाद हमको पता चलेगा ये फोन नंबर क्यों दिया उसको। व्हेन एवरीथिंग इज अवेलेबल, इज नॉट सपोज टू कॉल इट फ्रॉम हिज मोबाइल। मोबाइल से कॉल करने की जरूरत नहीं है, कॉल करा हुआ तो ये कुछ गलत है, हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। वो इन्वेस्टिगेटर को वो डर रखे हैं क्योंकि ही इज नॉट सपोज टू शेयर हिज मोबाइल नंबर, और कॉल उसका फर्दर जो फ्रॉड होता है उसको भी ऐसा रोक दिया है। सर बहुत अच्छा आपने बताया, मैं उसमें थोड़ी सारी देता हूँ। We have also developed one application since 2011-12 and we are developing and developing. We have the GPS location tracker in that application. We have communication details. Even that application is so often without, you don't need to on the camera, automatically on the camera when it's required. We can control from here what is talking to their client and everything. Even after that, we understand. What happens? Suppose you are registered on a mobile number. Everybody has two mobile numbers here and there. Now people are taking another SIM card. You cannot do anything. If in my mind I decided I have to cheat, then God can say. You can, put some barriers, put some regulations, not regulations, strict warning, whatever things. Even you develop the application, certain सा मोबाइल खराब हो गया, कुछ नहीं हुआ, बहुत सारे इश्यूज हैं, ये सब कुछ करके देख लिया। बट ये एक बहुत जरूरी चीज बताता हूँ, कई बार ये कहते हैं, मैं दोनों से गलत नहीं कहता हूँ, कई बार इन्वेस्टिगेशन जिसका जो क्लेमेंट है उसी की फैमिली पैसा देते हैं। मैंने ये चीज खुद फील्ड में जाके देखा, मैं सरप्राइज हूँ। आजकल तो सबको पता है, एक इंश्योरेंस फाइनेंसर बहुत घूम रहे हैं। आप अगर कोई गुजरात बेस है तो आपको ये आपकी सुंदरनगर एरिया, किसी जमाने में मेरे पास एक रिपोर्ट बेसिस पे अभिमान ने उसको ब्लैकलिस्ट किया, वहाँ पे इंश्योरेंस देना ही है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एरिया है, लेकिन आपके महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर एरिया आप देखिए, वहाँ पे भी बहुत सारे इंश्योरेंस फाइनेंशियल। यस, I came to know about this word in Morena long time back. My investor was there. When he reached the place, two people came into who are having the claimant's mobile number. They told, okay sir, this thing we can arrange the documents. Even as surprised to know, they know whatever documents you require, where you want to go. Even sometimes they know who is the claim manager in the company. It's very surprising, but how a claimant person knows who is the claim manager in the company? I'm talking to the company also. They are also not, everybody is honest people. And we rejected that claim. That person told my person, you reject 1, 2, I have 10. And I know I'll get 5 first. And after almost 2 months, I came to know that person got claimant money from 6 insurance companies. And nowadays, that person using 2 Fortuner cars. He is an insurance financer. They have a team. They reach every hospital. They find out the person is going to die. They do the insurance policy, insurance advisor, everyone connected. I don't think insurance, the person investigator who is just getting from the 5,000 or 6,000 rupees from the insurance company, go to that place and do the deep investigation. I don't think anybody is spending more than 2 or 3 days in any case. And I am 100% sure in 2-3 days, by good luck you can do, but you cannot find out the exact fact what is happening. Okay. But nowadays everybody pre-plan. They know everything. What document is required. Death certificate, yes. Panchayat secretary certificate, yes. Doctor certificate, yes. They have the stamp of the doctor. They have the Dr. Dubey in Patna. Anybody from Patna? Yes. Dr. Dubey. His stamp available with many insurance advisors. And they use it. And he has a clinic. And he certified, yes, I have given the certificate.
He has a commission of 20% from the claim money. But nowadays he is in the bar. He is arrested and what is that? My question is not to blame others. My answer to it is how we regularize ourselves. What is the solution with it? सीधी सी बात है, हम इंसान हैं, हर कोई पैसा कमाने की भागते हैं, हर कोई भागता है सुबह शाम तक, कोई चैरिटी करने नहीं आता। बट एंड ऑफ द डे आपकी पैसा कमाने का क्या गलत रास्ता सही है, मैं आंख बंद करके नहीं कह सकता हूँ और किसी भी पसंद में कह सकता हूँ। मैंने अपने लेवल पे जानकारी में लिया और मेरी कंपनी से 6 बंदे आज की डेट में जेल में हैं, जिसमें 2 की बेल हो गई, 4 अभी भी जेल में, सिर्फ पैसा पकड़ने चला भेजा। और उसका केस मैंने खुद केस में कोर्ट में लड़के उसको हटाया। उसका माँ बाप आगे नहीं सर ऐसा नहीं करे, ऐसा नहीं करेगा, गलत तो गलत है ना। एक बंदा पता चला कि वो तो घर में 3 मंजिला कोठी बना लिया इंश्योरेंस पैसे से। ये होता है, कोई मानेगा ना माने अलग बात है, बड़ी होता है। जो फील्ड में जाते हैं, जो लोग ऑफिस में बैठे उनको पता नहीं चलता, बट आपको इन्वेस्टिगेटर को पता है फील्ड में होता क्या है। वो आप जैसे पहुंच जाते हैं फील्ड में ना, आपको भगवान मानने लगते हैं। आगे आपके लिए सुबह शाम खाना पीना, आपके लिए गाड़ी, आपके लिए ले जाएंगे, इसके पास ले जाएंगे। एक्चुअली दिस जॉब इज for the investigator. He has to go, he has to visit to the panchayat secretary by himself and to find out the facts. But if somebody from the family will go along with you, what will happen? You will give only that, what family already informed you are going to this report. So you will not find anything. So first of all, we have to create one institution, or I can request the sir to create one online training session. At least we can weekly once, people can register paying 100 rupees or 200 lot of things. At least 1 hour session. 2-3 experienced investigators from the industry, we can take them, and so that they can give a training what to do, how to do. At least they should get a proper training. Nobody has a proper training. Secondly comes legality. Everybody is asking whether insurance investigation or whatever insurance is legal. Honestly speaking, nothing is legal, but yes, when somebody authorizes you to do something, the insurance company, he has authority from the company, because claimant himself signed on that, the insured person, yes, after my death or anything happens, company can investigate about the fact. And that, he transferred that power to you as an authority letter. That is okay, but not in private investigation. Few years back, we had a session in Pune. Who were there in Pune? जिसमें अनिकेत था, राज था, वो वाला सेशन में कौन थे? आप थे शायद, राजेश जी आप थे ना? हाँ। उसके बाद एक बड़ी भीड़ लगी कि हम ना सीडीआर देंगे। सीडीआर की बड़ी बहुत डिमांड है इन्वेस्टिगेशन में, कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन और मैट्रिमोनियल हो गए, सीडीआर की बहुत डिमांड हुआ। और उसके चलते क्या हुआ? व्हाट हैपेंस? मेनी इन्वेस्टिगेटर आर ट्रैप्ड, got arrested and harassed by the police because getting CDR is illegal. Surveillance 100% illegal. You can use technology nowadays. Just pay fee for 500 and 1000 rupees. There comes a kid comes with SIM card, with magnet, put the person's car and just track from your mobile where he is going. Yes, you cannot get, but you can listen what he is talking. You can place that kit in the car. It is easily available on Amazon and others. You can find out. Use technology. Don't follow anybody. And automatically that kit, that gadget will die after 7 days or 10 days. Your work will finish. So question is that nowadays technology is available. We use that. Don't do physical. It is very costly. If you ask anybody here, surveillance comes around 7,000 rupees, 5,000 rupees per day. I think corporates can afford it, but not very medium class people. There are so many lost manners, but I'm talking about legality. Try to understand, whenever you are not entering anybody's privacy, then it is legal. Whenever you enter anybody's privacy, it is illegal.
and without any authority you are entering anybody else's premise, that is illegal. No way you will get approved. अभी नजदीक से कुछ दिख नहीं रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई पास नहीं करने वाला, क्योंकि हमारी प्राइवेसी आग इतना स्ट्रॉन्ग है, गूगल फेसबुक ये सब परेशान हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सबको डंडा लगा रखा है कि भाई आप किसी की प्राइवेसी बाहर डिक्लेयर कर ही नहीं सकते, डेटा चोरी होती है। आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपनी मोबाइल नंबर डालिए किसी चीज़ परचेज करने के लिए, कल से आपका कॉल आना शुरू हो जाएगा। प्रॉपर्टी लेंगे, लोन लेंगे, कार लेंगे, हाँ जी इतना सब होगा। आपका डेटा एक रुपया बिकता है और ये महीना बिकता रहता है, आपको पता नहीं है। मॉल में जाते हैं, सर कार लेंगे, फॉर्म भर तो फ्री का कूपन है, उसमें डेटा चोरी होती है। वो प्राइवेसी आपके एंगेज में आप चाहो तो उस कंपनी में केस कर सकते हो। बट एक बहुत बड़ी हम बात करने जाते हैं आज डेट में कि आप इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर को लीगलाइज कैसे करें। थोड़ा सा अपनी तरफ से जो मेरे दिमाग में आया मैं आपको शेयर करना, तो उसको ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। थोड़ा बहुत हम एक पोर्टल डेवलप कर सकते हैं जिसके अंदर ट्रेनिंग सेशन भी रख सकते हैं और एक ऑनलाइन एग्जाम भी रख सकते हैं। जैसे एडवाइजर के लिए होता है, ट्रेनिंग सेशन होती है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, जो पास होते हैं उनके लिए हम अप्रूव करेंगे, ये हो गए। उसके बाद हर बंदे को इंडिविजुअल कोड दे दो। आप जानकर हैरान होगी, आप सब बैंकिंग सेक्टर में जो लोग हैं सिविल चेक करते हैं। आपको पता है सिविल एक प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट का कुछ नहीं उससे लेना देना। बैंक आपकी डेटा एक प्राइवेट कंपनी देते हैं और दैट टू बी दैट कंपनी ओन्ड बाय द वन यूएस कंपनी। सारा डेटा आपकी यूएस जाता है, पूरा बैंक फाइनेंशियल एवरीथिंग सिविल प्राइवेट कंपनी। बट आज के बैंक लोन लेने से पहले सिविल देखता है। आप कहीं किधर भी लोन लिए सिविल चेक करता है। क्यों? पहले किसी ने बॉम्बे में फ्रॉड किया, दिल्ली चला गया, दूसरी जगह से दूसरी लोन ले लिया, कि बॉम्बे दिल्ली वाले बैंक को पता नहीं चलता बॉम्बे से चीटिंग किया, आज सिविल से पता चल जाता है। सेम उसी टाइप हम एक पोर्टल लॉन्च कर सकते हैं जिसके अंदर हम कोड दे सकते हैं हर इंडिविजुअल को। जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर बनेगा, इन्वेस्टिगेटर बनेगा, उस पर कोड आ सकता है। जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा उस कोड बेसिस पे करेगा, उसका ट्रैक रहेगा। कंप्लेन हुआ उसी कोड में मेंशन होगा, ब्लैकलिस्ट करना है उसी कोड पे कर सकते हैं, इसको बैन भी कर सकते हैं। इसे दो फायदा है। इंश्योरेंस कंपनी को पता होगा कि पहले पीछे से सबने अपने लिस्ट इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर की लिस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी को दिए होंगे कि दीज आर इन्वेस्टिगेटर्स वर्किंग फॉर मी, ठीक है। बट आज राम का नाम दीजिए, श्याम का दीजिए, इंश्योरेंस में थोड़ी चेक करने जा रहे हैं किसका जा रहा है। बट इफ यू कोड then you will be tracked all over how many cases you are doing, how many cases doing for Bajaj, how many cases you are doing for Kotak, how many cases you are doing SBI, whatever things. It can be tracked. And suppose any complaint comes, then there is a demand system. Just like credit score, you can have a score. Suppose you have best investigator, if credit score is good. So we can track this way. And I'm surprised, I have seen so many investigators, even 10th pass people from the village area, they are insurance investigators. I met one guy in Ranchi 3-4 years back, he just 8th pass. I am surprised how, and he is doing investigation of the Bajaj plan, life insurance investigation. 8th pass. He told, sir, I got trained for 1 month under guidance of a senior, and then I am doing this in the last 2 years successfully, and my negative ratio is this much. Nowadays, everybody, my negative ratio is this much, my negative ratio is this much. एक कंपनी है, नाम नहीं कहूँगा उसकी, उस कंपनी ने अपनी ऑफिस में लेटर हेड, स्टैम्प सब डॉक्टर का बना रखा था, और उसने दवा के सबकी नेगेटिव रिपोर्ट बना के भेजा। बाद में कंपनी क्या करता है, अगर डाउट हुआ तो उसको दूसरे से इन्वेस्टिगेशन करवा देता है। वो कहता है नहीं तो फेक है, दिल्ली की कंपनी है। अब वो ब्लैकलिस्ट हो गया, फिर दूसरी कंपनी कर रहा है, ये भी चल रहा है। इसीलिए हमको कहीं ना कहीं रेगुलेट होना पड़ेगा। एक जैसे एडवाइजर होते हैं ऐसा हम इन्वेस्टिगेटर अपना कोड कर लेंगे। अगर ये चीज कर लेंगे और हमारे पास 2000, 4000, 5000 जितनी भी है ऑल इंडिया में, अगर हमारे पास सारे डेटा होगा
कल सुबह IIT के पास जा सकते हैं। अभी जो IIT के चेयरमैन है देवाशीष पांडा, वो मेरे बहुत क्लोज हैं। मैंने अभी 10 दिन पहले उनसे बात किया था इसी टॉपिक को लेके। You know what he told? Not a single insurance company approached me for this, for investigation, to regulate that. And he told me, if you have such proposal, then come to me. But if you go alone, शायद मना कर दें। एक बंदे के लिए IIT में क्या करेगा? वहाँ की इन्वेस्टिगेशन रेगुलेट करो, कोई नहीं करेगा। बट आज टीम, आज ऑर्गेनाइजेशन में हम जाएंगे, शायद हमको फायदा होगा। उसके लिए हमारा डेटा होना चाहिए, उसके लिए सारे इंडस्ट्रियल रीच होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन। आज कोई भी कोई जॉब करता है, किसी को रखते हैं ऑफिस में मैनेजर, पूछते हैं ग्रेजुएट है कि नहीं है, रिपोर्ट लिख सकता नहीं लिख सकता, पर इन्वेस्टिगेशन के लिए 10वीं पास को लिख देते हैं। ये समझे नहीं, तो डॉक्टर से बात क्या करेगा, पुलिस वाले से बात क्या करेगा? कर्नाटक का एक केस है हुगली में, 17-18 की बात बता रहा हूँ, 50 लाख का क्लेम था। इन्वेस्टिगेशन हुआ, पेपर में छपा हुआ था कि बंदे ने मंदिर से वापस आते हुए एक्सीडेंट हुआ और उसका डेथ हो गया। ये न्यूज पेपर में आया। पर ये क्लेम 1 साल के बाद उन्होंने डाला, ताकि तब तक वो इंफॉर्मेशन ही पूरा वैनिश हो जाए। बट इन्वेस्टिगेशन जब गया तो वहाँ पूछा और देखा, सब जब पूछा, सब ने कहा हाँ जी ऐसे हमारा गाँव में था, गया था, गए थे, रात को लेके गए थे, ध्यान वाले भी नंबर दिए, जिस गाड़ी में गया था हॉस्पिटल, यू नो दे गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन रेडी विद देम, they know what to say. Okay. Police complaint was there. We went to police station. Yes, proper registered everything. Doctor report is there. Everything is there. Unfortunately, when somebody, every village has somebody against, but he just come to contact the investigator and told me no, he died. She died in this matter, and you can check the newspaper of that. Then we search it, find out the newspaper recording. Then without telling anything, we come back home our base and submit the report. This is the fact. But if you do investigation there, so life risk is there. So it came out. Claim rejected. After some time, we come to know from the company that you have to go to the court and appear and give a submission that you investigated this thing, and on your basis of the report we rejected. Now they are challenging the case. Then we, the local contact and find out in this particular case, police, doctor, वकील, क्लेमेंट की शेयर 40% है, बाकी सबकी 20% है, 50 लाख में सब मिल जाएगा। So now they started a family business, and honestly speaking, we given to the court and first informed to the police station that we are going to this, we are threat for life. Then police station told me, sir, don't worry, because we talked to the SP directly, and they told me, I'll send a special team with you, you go and committee. So we did that part. So here, I understand the investigators facing life-threatening challenges always, many times. Because if family members come to know you are going to submit a negative report, even either they will threaten to you on phone, or they will try to blackmail through anybody unknown. If you are local, then they will. Now what happens, suppose many companies are doing, suppose you have a case in Bihar, you deported to Bihar, people are there, local people. So what happens, suppose claim rejected in that locality, so they are the local people. They try to threaten them, because of you, we lost the case. So this also comes with challenge. So if we use a code, we can save ourselves. We don't need to disclose our name. You don't disclose our identity. My code is everything. Nowadays, income tax is doing something. If you go to income tax, you don't know who is assessing your file. You just got the code, so that you cannot drive anybody for your work. So why we cannot do this thing in our case? And this system, I am telling you, readily available with me. Readily available. Where you can register, you can do your KYC, you can appear exam, and you can get one code. And everywhere, there is no name, only your code will be there. So your safety security is there, matter, come out, you don't need to disclose yourself, that's the first thing.
Your number will not disclose. Until unless you have intensity that I have to take money from them, you will disclose that this is my number. When claim will come, you share with me. That can be differently. But at least we can do something for ourselves. If you have complete data, we can go to the IRDA and tell them, okay, this we have 2,000 investigators or companies. Let us do something for us. So I can assure you, we can go to the IRDA chairman with some of the team members and approach them. And it can be done before his retirement. That's the first. Sir, IRDA is more interested in, rather than calling us as an insurance investigator, we are more interested in calling ourselves as a private investigator. Sir, we are tirelessly working for it, how to get the recognition for private investigation through legislation. Sir, through the legislation, it is completely dependent on the assembly and the parliament. Yes. It is not our hand. That's the first thing. We can approach the Home Minister, write request to them. This is the only process. And for that, we should have the sufficient data. At least we can say 5,000 people are there who are into this segment. Then only we are just. Yes, in this regard, I would like to place on record that in 2007, there was a bill in Parliament as a private security bill and private investigator bill. That time the law commission has studied and the security bill was passed because there was a plenty number of security agencies were working in India. Then after the law commission has asked to one association which was not FEDI, taken. yes, they have not very much the members are from investigators, private investigators. So that time the law commission asked, they said that only 130 investigators are working across India and they have very much demand in that day. So the government has replied, for 130 people why there is a need of regulation? Let them work, let them train out themselves, let them increase their population. Then after, if they will approach to the parliament, we will do it. Now we are in process that 2007 bill was detabled now because with the change of time many things have been changed and that bill was become obsolete and now it is detabled. So now we are again in process of preparing a bill to be tabled in parliament and I am very much hopeful that within some years we will get the recognition as private investigators. Sir, I agree with you. I just want to add 2-3 things. In 2007, the bill was placed. All the members in APDI, I was not a member there, majorly are security agencies, but they tell themselves we are also detective. Right. But security agency is different, investigation is something different. Don't mix it. Okay? And their majority, the big names in the industry, they are security agencies. So that's why they passed it. But security agency does not come from the Privacy Act. That is the only act which is protect, That's right, because it was not the single bill, it was two bills that were submitted. One is a security agency bill and other was a private investigators bill. So these two different bills were there in the parliament. But security agencies bill was passed and private investigation bill was defeated. Sir, private detective bill, they ask two questions. One is how it will counter with the Privacy Act, which is Government of India's Act, for which Supreme Court and other companies, for Aadhaar also there is a big fight in Supreme Court. It violates the Privacy Act and everything. So now India government or Supreme Court majorly taking interest for the Privacy Act. You surprised to know nowadays AI came into picture. Anybody's photo can be clapped with anybody and post in social media, and it is also argument just 2 days before the Supreme Court was there's big argument going on for this. This is only for this Privacy Act. For that, Facebook was challenged around 500 crore rupees. Facebook was.
So until unless you have decided the privacy part, that's I told you, until unless we enter anybody's privacy, our job is legal. But whenever you enter anybody's privacy, then it's illegal. That's the first. Suppose many of might be facing the problem, police ask you, how you run a private investigation agency? Even there is a private limited company, which ROC is allowing you to run a company, police is asking, but now police will not ask you. There is a rule, now police come to know, they cannot ask you what is the thing. Well, they will catch your investigator by surveillance, or they catch you, doing something in CDR, or taking photographs of somebody else without the permission, then they can take action. That is the evidence of privacy. Even the best part is that the police is taking our help in investigation of some crucial cases. It is up to them because I have experience. The police officer has called me for a murder case investigation, and I have successfully done it because the police has some limitation, but the private investigator can do because they have some protocols to follow. But we as a private investigator, being not regulated till date, we have all freedoms to do the investigation through legal ways. So the CBI approached me. I have an appointment letter from them. Can you investigate this case? I have a letter from police officer. Can you help me in this private murder case investigation? So now the scenario is changing. Even the authorities are taking our help in investigations. So this is the best part of things. Sir, I agree on this, and also I am also helping in India and abroad also many government agencies. They are taking our help as a consultant, as an individual, not as a private investigator. You check on the letter when they give you certificate, give your name. Police can hire any consultant for any. Sometimes they don't have any. I have an appointment letter from CBI. You investigate this. Sir, they ask you for investigate. Even everybody knows there is a big case in Delhi, Sonanda Puskar, Sripurusha wife. I also handled that case from part of the case. I got appointment letter, everything. But as an individual, not as an investigator, they define your job to investigate. You can just insurance company, give you authority letter to investigate the case. Similarly, they are also approaching, but they don't allow you to go anybody's privacy at this point. That is even. I'm telling you, even police is not allowed to waste anyone's privacy. Sir, how can we? Sir, that is the only point is that until unless you are not entering anybody's privacy, then you are legally under competence to do it. Whenever you are entering anybody's privacy, you are getting matrimonial case. Okay, I am telling you 100% matrimonial case is illegal. You will take it part of the law. But every parent do it. They want to secure their child's future. Okay, nowadays everything happening everywhere. We are going to newspaper, find out so many divorce, so many things, so many, histories of criminality, everything there. But if you enter somebody's, follow somebody, take out the photographs and everything, that is against the law. Explain this, sir. Yes. What about this investigative journalism where the sting operations are carried out? Sir, Is it an invasion into the privacy of individual? Sir, there is a called is media, not an investigator. Media. If you look at the sting operations, media are allowed to do sting operation. Again, nowadays many media houses are facing many cases from the individuals for their privacy, future privacy. But media is allowed because they presenting themselves that they are finding the facts, what is happening in the industry or what is happening in the society. Okay, that's what they are saying. But as an individual, I told you, suppose what Mr. X is doing, suppose I got sent to an assignment, big corporate house, big from the very beginning, it's companies, top 10 companies. Their CFO is a new appointment. Okay, I got a order from the chairman. I need the complete detail of the CFO, everything, personal, private,
where are you going, what are you? Just think, I 50,000 crore company and he CFO. The chairman wants everything about him. So it is a big chapter. No. Legally it is not allowed to do. But yes, it is a profession are doing. If you go, it is a legal and illegal. Okay. So we have to understand what insurance investigation, pure legal work. The time you have authority letter, you are authorized to do it. Without authorization letter, it is illegal. But we have a process. Just like I told, if we will approach to the government with some data, earlier bill was rejected, obviously for 130 agencies, do you think government of India will pass a resolution in parliament? No. But if we 5,000 in figure, there is a challenge. We can go to the chief minister, at least we can pass a resolution in a state, any state. Then we can go to parliament. There is a process. My first step is request to you, let us go to IRDA, get approval of the insurance investigator at least. There is a major chunk of insurance investigations across the country. Major. So, if you do one part, at least 25% of our journey is completed at this point. Then we go to the next step. Okay. So, we have to work in such a way, step by step. First, we have to regularize ourselves. We should have a system. The system I already elaborated. We should have the code system instead of the name, number, everything. Every individual investigator should be, even the company who is hiring an investigator, he should ask, do you have code? If you don't have code, I will not hire you. Then you give a code. If the code, you can check it, whether he worked or not. Many investigators come to, for interview, sir, I am working since just 3 years, I did 100 of cases and 80% are negative. Practically, this is a statement. But do we have any system to check it? This is a statement. We don't have. Even the person who is doing for 2 months back, he is saying I am doing 3 years back and I am doing all the things. So to do that cross check, we should have system. Once we have the data, we can go to the IRDA, we go to the insurance companies and tell to the claim heads, okay, this is the process we are doing and this way we are approaching. If you are giving a case, you can assign you, this is the code of person who did investigation. Whether one comes, so there are so many cases. I don't know how you face or not, but I am facing that part. Some employees work 2012, 2013, left the company. I don't know where they are. But now the case coming, legal case. Notice came to us. Then what happens? As owner, I have to appear. So, if we have the code, we can come to know who did investigate, where he is now. We can approach the company, this is the person who did the investigate, you can send legal notice to him. Company can be saved. Company can be saved from the legal hassles. So, first my step is to regularize ourselves. Once we did that part, we cross this part, then we go to the next step. Parliament is a big thing, yes, for that we need a data. Suppose you have 5,000 people start and working on it, definitely we can reach. Everybody has connections to government, some are administered, some might be connected with some big bureaucrats. So we all can approach and get things done. That can be possible. Legally, private investigation job is not legal. Until unless you are authorized by authorized body. Suppose I give authorize you, this investigation, does not mean you got authorized to do it. There must be authorized body who will authorize you. Just like I told me that CBI is given authorization to do investigation. That is authorized body is given authorization. Okay, so do that part. Now this new type of investigation is coming in corporates. Corporates, majorly, many type of cases. I'm taking one of the cases, style. One corporate big mobile manufacturing company, he told, sir, my
marketing head and operational head at least getting 1 crore rupees drive every year. I go, wow, 1 crore every year? And how? Then they told, sir, we keep a budget of 5 crore, 10 crore, 10 crore for the marketing purpose. And what happens, suppose in Bengaluru, there is a big function, in Kolkata there is Dasara, Delhi we have Dasara also. So what happens, various pandals, so we are doing advertisement, everything. What happens, they approve that letter, okay, give 1 crore this pandal for this advertisement for 10 days in Kolkata. These incidents are in Kolkata that I am giving the example. And for that, suppose the pandal charge for 50 lakh or 1 crore. They told sir it's 2 crore. Official given 2 crore and later 1 crore divided. Sir. And somehow, similarly nowadays you are seeing the mobile companies are doing big showrooms, big hoardings. There is a big contract, 5 crore, 10 crore contracts. So they give the contract to the companies and take bribe of 1 crore, 2 crore for it. So the chairman told me, sir, I need to know. These are my heads, I cannot remove them right away. But I have doubt. I come to know from my sources, they are taking this money. Sir, it took 7 months to dig out the facts. 7 months. 10 investigators. Various resources, undercover, out, everything, finance audit, computer audit, everything I did. Then I find out the facts. And the concerned person who's repaying the thing, return the money, he verbally accepted recorded video recording, yes, we are getting last 5 years, we are getting money from them and they are taking this much money. So question arises, as an investigator, at what extent you can go? What extent? Certain point, police can go and ask anybody, Mr. Come, I'll do investigation. I need a call detail, you can give a letter, DCP's mail ID, you can get the call detail. But as an individual, what will do? Then you approach some friends, sir, do you have any sources to get the CDR? Sir, do you have any sources to get the mail ID hack system? Many people approach me, sir, you need mail ID details, then I can provide you. Please don't go into that. I tried many, they all failed and taken my money. Then I set up my own. So these are things, illegal works are approached by our investigators to please their clients. They want to show we can do everything. You give the job, yes, they are doing. Even we are doing. But certain extent. कॉल डिटेल के तो सब लोग परेशान होंगे, पता है मुंबई वाले ज्यादातर, दिल्ली वाले भी हैं, मुंबई वाले भी हैं, सारे सब मिलके हुए हैं. क्या नाम उसका? भूल गया. क्या नाम पुणे वाला जो था इन्वेस्टिगेटर? सर अनिकेत. और भी बहुत सारे हैं. प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, उस चीज में मत पड़ना. उसका सोल्यूशन बढ़िया रास्ता है. आप जाइए थाने में किसी के खिलाफ एक कंप्लेन लिखाइए, ऑनलाइन डाल सकते हैं, पुलिस वाले को 2000 रुपये दीजिए, ये भैया इसको निकाल दे, इस केस के खिलाफ में, तो उसको सीढ़ियाँ निकाल देंगे, वो 2-4 और पैसा लेगा, वो निकाल के दे देगा, आप निकल जाएगा, वो बच जाएगा, कोई दूसरा. ये सीधा तरीका है, बात मत बोलना. ऐसा हम आज यूज करते हैं, कर भी लेते हैं. भैया किसके रिश्तेदार पुलिस में तो आराम से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं. बट कभी पकड़े गए तो सब पकड़े जाते हैं. और ये बस फैक्ट है, हमको लगता है कि हमारे ऊपर किसी की नजर नहीं है. Believe me, my brother himself, being a DCP in Delhi, is going to join commissioner in Delhi. My own brother, he told me, we are keeping eye all investigation agencies and their boys. They are keeping eye. हम सोचते हैं हम कोई नहीं देख रहा, हम सबको दिखा. दिल्ली में खास कर बता रहा हूँ, मैं तो बाकी स्टेट की कह नहीं सकता. सबके ऊपर नजर है. जिसके पीछे इन्वेस्टिगेटर लग गया, उनके ऊपर नजर है उनका. इसीलिए थोड़ा बच के रहिए. वो जब तक हाथ नहीं डालते, जब तक कोई इतना बड़ा नहीं निकलता कि हाँ कुछ बड़ा कर रहा है, पर हाथ डाल देते जब तक पड़ सकता है. और जब हाथ डालते हैं ना, 2 साल आगे तो चला ही जाता है. इसीलिए खुशी से देखो, पैसा कमाओ, बहुत कमाओ, मर्सिडीज गाड़ी, डिफेंडर, सब करो, बट
इलीगल मत जाओ। ये मेरी सजेशन है, मतलब रिक्वेस्ट है इस बात की। दूसरी बात ये चलते हैं हम, एक बहुत अच्छी चीज आजकल चलता है आईपीआर में कितने लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं भी कुछ जानना चाहूंगा। हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग इन आईपीआर? नोबडी हियर वर्किंग इन आईपीआर, कोई भी नहीं कर रहा है। इंश्योरेंस में कितने लोग हैं, हाथ खड़े करें। देखो आईपीआर बहुत बड़ी फील्ड है और बहुत अच्छा फील्ड है और लीगल है। सिर्फ कंपनी से आपको ऑथराइजेशन मिलेगा, खुशी मिलता है और आप आराम से कर सकते हो। आप समझ लीजिए, आई एम टेलिंग ऑनेस्टली, इफ यू डूइंग 100 इंश्योरेंस क्लेम इन्वेस्टिगेशंस, you can get one IPR case and get that much of money. It is less of potential. And nowadays, in across the industry, if you go, starting from this water bottle you are telling, now you know if Delhi or NCR or train anywhere, distillery duplicate बहुत मिलने लगे मार्केट में। distillery की duplicate बहुत जगह अवेलेबल है। आप किसी भी चीज के लिए लीजिए। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी लेडीज कॉस्मेटिक का कंपनी है दिल्ली में, भवान में पकड़े हैं। यू विल सरप्राइज द पर्सन सेट अप ए कंप्लीट फैक्ट्री एंड 4 ट्रक की सामान निकाले, 4 ट्रक। और ओनर मेरे साथ खड़ा था मिश्रा, वो कह रहे जी मैं तो शायद मेरी फैक्ट्री में इतना नहीं बनता, इतना ये बना दिया। और मैंने उससे स्टेट पूछा, भाई जब तू इतना कर सकता था तो डुप्लीकेट क्यों बनाया? साथ मार्केटिंग में इतना कौन खर्चा करेगा, नाम चल रहा है पर उसने उसका प्रिंटिंग मशीन जो उसे प्राइस मेंशन होता है ना, 20 लाख का मशीन उसे खरीद के लगाया है। आप खुद मालिक सामने दोनों प्रोडक्ट रख दो, वो कह नहीं रहा कौन सा ओरिजिनल कौन सा डुप्लीकेट। इससे बहुत थोड़ा मेहनत है, 10 दिन 15 दिन की मेहनत है, बट इतना पैसा मिलता है। 100 इन्वेस्टिगेशन करने का पैसा इनको ज्यादा मिलता है। इंश्योरेंस को मैं तो 4 महीने का पेमेंट देता है, तो मेरे को अपलोड कितना टाइम मिलता है, और 3-4 महीने तो लगा ही देता है। रिस्क भी तो रहता है सर। रिस्क नहीं, आईपीआर में रिस्क नहीं रहता। क्यों, मैं बताता हूँ। इफ यू गो फॉर द रेड तो आपकी रिस्क है, आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट में रिस्क नहीं है। आगे बायर आप जाइए मार्केट प्रोसेस करिए, बट आप अगर रेड में जाते हो तब दिक्कत है। रेड में कभी मत जाना, वो तो पुलिस का काम है। जगह जगह तो बाहर जाओ करो, आगे मत जाओ। आईपीआर बहुत अच्छी फील्ड है, अगर कोई एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं प्लीज डू इट, ये आपको बहुत फायदा करेगा। Expansion of IPR. Patent rights. Patent rights. Suppose this is a product, ये आहूजा कंपनी का है। मैं रूबरूब I can make the same copy, duplicate copy and sell to you. Suppose this is for 5,000 rupees, I will give you 500 rupees. In simple words we can say, in simple words we can say it is verification of counterfeit products. अगर आप मार्केट में कोई counterfeit product उसी नाम से सेल हो रहा है, आज कृति सर ने सबसे पहला एग्जांपल वही दिया था। तो counterfeit product जो हम लोग मार्केट में पकड़ते हैं, मैं भी उसका इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। एक तो कॉपीराइट वायलेशन होता है और दूसरा काउंटरफीट, अगर डुप्लीकेट प्रोडक्ट कोई बेच रहा है तो उसमें हम लोग बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और इन्होंने बहुत राइटली कहा कि वो एक कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन में आता है, इसके लिए उसका एक 100 आप इन्वेस्टिगेशन अगर इंश्योरेंस के लिए करते हैं तो वो एक इन्वेस्टिगेशन में जितना फीस मिलता है उतना हमें कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन में मिलता है। तो दिस इज अ वेरी नाइस फील्ड, हम उसमें ना एक नया हमारे करियर अपॉर्चुनिटी हमको एक्सप्लोर कर सकते हैं। You are absolutely right. You are absolutely right, Jaga sir. And it's an eye opener. In fact, one US company approached me on a garment factory here in Bangalore, which was manufacturing a high-end jeans, which sells around 4,000 rupees in their showrooms.
but the same jeans is available for about 400, 300 rupees, 70% discount, 80% discount, या इस तरह की जगह पे दुकान में वो चीज मिल जाता है. Even though they had Indian branches, Bangalore offices and Bangalore head office, this call came from USA to me to investigate. And believe me, I exported those duplicate garments product to another third country, which is South Africa. I exported duplicate products from Bangalore to South Africa, and 4 factories of that manufactured product of that company, or the product which was being manufactured here in Bangalore was closed because of that. So it's a major money is involved in this, and investigations can go up to any level, and the price is yours. There is no market set price. पहले वो पैसे दे देते हैं, बाद में आपको काम करके रिजल्ट देना है. So it is a very wide market. You rightly said. मैं आपको छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, बड़ी थोड़ा आगे लगेगा. मैं 2013 इसी दिसंबर के आसपास हो गई. आगरा में एक वुडलैंड फैक्ट्री था जो वुडलैंड शूज की जूत बनाता था. सारे वुडलैंड की जितनी वैरायटी शूज उसके पास है. Even as surprise that woodland shoes are last same quality as the woodland. Big factory, 150 employees, everything. We collected, submitted to the company. Company Legality came to meet with me and understand, and we went with them and saw the complete factory. We did the videography, everything, secretly we did it. But at the time of raid, there are 7 policemen, 2 company people, and 1 of our investigator was there. They told us if somebody from your side will demand, so it will be easy for us to locate the store and everything. Okay, that's fine. Sir, पूरी 70 people in शॉप को घेर लिए बंदूक के साथ. आप उस चीज को अंदाजा लगा सकते हैं, उस चीज का आप सोच नहीं सकते क्या हालत होगा. पुलिस वाला छोड़ो, मेरा अपना बंदा क्या हालत क्या होता, क्योंकि वो मेरे लिए काम करता है. उसकी लाइफ कुछ हो जाए, उसी घर पर तो मुझे फंसे रहता है. उन्होंने कहा तुम जिसको फोन करना है फोन कर लो, आज आप यहां से नहीं जाओगे. सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज, बताऊं उसका कैसे मैं हैंडल किया. मैं जानता हूं इमीडिएटली मैंने अपने ब्रदर को फोन किया, तब तक वो नागालैंड में पोस्ट था. मैंने कहा भाई ऐसे से बात है, और आगरा में कोई तेरा क्लासमेट है क्योंकि वो IPS है, कोई हेल्प करते जिंदगी पड़ी ना, क्या पुलिस, चलो पुलिस पे जाए. तो उसने किसी हिसाब से बात किया, फिर पता चला फिर से, और उन्होंने पुलिस वालों से सब तो देखो फोन आया था, पोस्ट ऑफिस छीन के सब कुछ रख लिए. गवर्नमेंट सोचिए 70 बंदे वो घेर के बैठे गवर्नमेंट के साथ, अब क्या करोगे. हिम्मत तो छोड़ो, चाह कर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, बोल ही नहीं पाओगे. पिटाई तो दबा की उन्होंने सबको वहां की पीटे. ये हालत होता है. जैसे मैंने बोला कि इस टाइम पे उसी से सीख लिया, अपनी मत कभी नहीं भेजते. देखो गलती से आदमी सीखता है, और मैं भी उसी सीख रहा हूँ. उसके बाद फिर पुलिस गए, फिर उन्होंने किससे बात की, फिर वहां से लोकल एमएलए से बात की. पता चला वो बहुत बड़ा क्रिमिनल का कंपनी है. एक तो जूते फैक्ट्री एक है, उसका 20 ऐसे फैक्ट्री है, और ऐसा कोई कंपनी नहीं है लेदर बैग से लेके जूते तक नहीं बनाता. यकीन मानिए उस जगह से हाथ पकड़ के खाली आना पड़ा. पुलिस के साथ गए थे, 7-8 पुलिस वाले थे. ये एक्सपीरियंस कहता है, इससे सीख मिलता है. सिर्फ काम करो कि आप इन्वेस्टिगेटर हो, दिखा दो सर ये बंदा है, अब आ जाओ, आपका रोल रोटी खत्म. यू आर नॉट पार्ट ऑफ द लीगलिटी टू गो एंड डू रेड. इट इज जॉब ऑफ द कंपनी एंड द पुलिस और कोर्ट ऑफ द. डोंट एंटर योरसेल्फ into involve yourself into the case directly, just do it outside. और बड़ी याद आया, इंश्योरेंस सब काम करते हैं. आसाम से कौन लोग हैं? Who are from the Assam? Anybody from Assam here? No? Oh, सर्कल. There is a location बारपेटा, सुना है किसी ने? बारपेटा बहुत अच्छी बात है. ये मेरे लिए आई ओपनिंग था, मैं जिंदगी ऐसे बन नहीं पाया. एक फैमिली में 47 मेंबर है. एक फैमिली 47 मेंबर है. चाचा ताऊ मुस्लिम फैमिली थे, पूरी जनरेशन है. और आप सरकारी शॉप की हेल्थ प्लान है,
सबका हेल्थ पॉलिसी है, उनका क्या है 2 बंदा हॉस्पिटल पड़ता है, हर महीने 2 बंदे सीक्वेंस पड़ते हैं हॉस्पिटल में और वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम देते हैं। सेट फैमिली बिजनेस। मैं हैरान हो गया और एक दिन मैंने जब मैंने रिपोर्ट दिया मुझे यकीन नहीं हुआ। कौन से हमारी डिवीजन है वहां से बुलाया तो मुझे चलो चलते हैं। तो मैं कहा मैं देख रहा था तो कैसे ऐसे हो सकता है। सर मिल गया मुझसे, कह रहे सर 5 साल बच्चे से लेके 80 साल बच्चे तक हमारे घर में सबके लिए पॉलिसी है और सबका प्रीमियम जो क्लेम पैसा आता है उसी से भरा जाता है और हर जब भी पैसा जरूरत पड़ती 4 बंदे एडमिट हो जाते हैं, अगर पैसा नहीं पड़ते तो 2 बंदे एडमिट हो जाते हैं। मैं क्या हुआ सर काम करने की जरूरत नहीं है। उनकी फैमिली में खुद एडवाइजर 4-5 है, खुद ही 4-5-10 कंपनी का एडवाइजर ले रखे हैं उन्होंने, मतलब पूरी संस्था है पूरा उनका। अब पुलिस को कमीशन जाता है लोकल हॉस्पिटल में, आप वेरीफाई करेंगे हॉस्पिटल बेड मिलेगा फोटो के साथ। देखो ये भी है, मतलब कौन किस चीज को कितना इस्तेमाल करता है। उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा क्या, एडमिट करा एडमिट है कि नहीं है, हाँ जी ये एडमिट है, हॉस्पिटल पड़ा है, डॉक्टर सर्टिफिकेट है, हाँ जी डॉक्टर सर्टिफिकेट दिया, और मैं क्या करोगे। ये भी है, मतलब तरह तरह के लोग हैं। आप हमेशा आउट ऑफ बॉक्स सोचने की कोशिश करें। थोड़ा ध्यान रखो। अभी दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल नाम सुना हो सबने, दिल्ली में बहुत बड़ी होगी, जसोला में कितना बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अपोलो नाम भी बड़ा है, आपको लगता है उसमें फ्रॉड होता होगा, कितना % चांसेस है। अपोलो जब उस नाम बड़ा है बट कितना % आपको लगता है उसमें फ्रॉड होता होगा। नो फीस में देखो उसने आपका बाईपास करना है 10 लाख लगा 15 लाख करते वो फ्रॉड नहीं कर रहा। पेशेंट है ही नहीं, उसकी बिलिंग हो रही, वो फ्रॉड होता है। मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट तो जीरो रहता है। अपोलो का ब्रांड है, सब बात कर अपोलो का तो बोलता हूँ जीरो है। सर उसका रास्ता बताता हूँ कैसे होता है, वो बता रहा हूँ। मैं शायद हो सकता है हेल्थ में हूँ, मैं खाली हेल्थ ही करता हूँ। अपोलो ऐसे हॉस्पिटल में जो है मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती, रह सकती है एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट, उसमें मैनेजमेंट की नहीं रहती है। एम्प्लॉय को कोई आप कैसे इन्वेस्टिगेटर को कैसे अपन मेंटेन मैनेज नहीं कर सकते, वो भी वैसा हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं। Sir, I must tell you, if you go to Apollo, you got a admission number, OPD number, everything. You got your other number, you got everything, your claim process. If you go to the claim, there is one doctor investigator comes to the field, he verifies the things. Okay. So in the big case, I am telling you, हार्ट सर्जरी, छोटा मोटा मैं कोई ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, हार्ट सर्जरी इसकी क्लेम है 47 लाख रुपीस। 2 डॉक्टर आए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, 2 डॉक्टर जो इंश्योरेंस कंपनी की पैनल पे हैं, जो जाके देखते हैं भाई डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहे सही ही नहीं हो सकते। ये बहुत पुरानी नहीं है, 3-4 साल पहले की कहानी है। अगर YouTube में ढूंढेंगे एक वीडियो बना है जहां से अपोलो वाला ने अपनी पार्किंग के लिए 100 रुपये चार्ज करता है, उस वीडियो बनाया उस बंदे की बेटे ने। अब देखिए उसको सर मैं तो खुद मेरे होश उड़ गया ये चीज देख के, कोई यकीन नहीं होता। प्राइवेट गाँव देहात में समझता, दिल्ली जैसा अपोलो में वहां पे पेशेंट एक गया, उसका कुछ नहीं हो, बहुत बढ़िया ठीक ठाक बंदा है। जैसा आपने सर ने कहा कि कोई इंटरनल बंदा होगा, हाँ वहां का एक लैब टेक्नीशियन का बंदा है, वो गया एडमिट हुआ, पेपर में बना, सोया, उसका ऑपरेशन भी हो गया पेपर में, उसका सब टेस्ट भी हो गया पेपर में, डॉक्टर ऑपरेशन भी कर दिया पेपर में, उसका सब कुछ हो गया पेपर में। और जो बीसी डॉक्टर का तो देख के आया, सोया है, आधा लेटा हुआ उसके ऊपर, सब कुछ लगा, सब लगा दिया। और उसने क्योंकि जब अंदर घुसेगा वो नीचे बोल देते हैं हाँ ये मतलब पेशेंट की विजिट करने जा रहा है, सब तो रेडी है, बेड की सब कुछ है। आज सोचिए उसने किसी ने मुझे बता फिगर एग्जैक्ट क्या नहीं कहूंगा, 1 करोड़ की होगा हुआ है। इट हैपेंस इन अपोलो। आप सोच सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली इंटरनल में इन्वॉल्व हो गया। अभी मेरी वहाँ पे रजिस्टर में पेपर कटिंग के साथ देखेंगे उस फाइल के नीचे पेपर कटिंग है 4 ऑफ इसी महीने
आज 4 तारीख को दिल्ली की हिंदुस्तान है उसी को ब्लू वाले फोल्डर में। हाँ जी उसके दूसरे रजिस्टर में अंदर एक पेपर है, एक न्यूज पेपर पढ़ी है। ओल्ड व्हीकल्स फेक थ्रेट्स इनसाइड एंड इंश्योरेंस का ये बहुत बड़ी न्यूज पेपर पढ़ी की 4 तारीख का है, इसको पढ़िएगा। दिल्ली में आपके आंख खुल जाएगा कि ये जो कार रिलेटेड करके कैसे एक बंदा दिल्ली का ही सर ज्यादा फ्रॉड होते ही होंगे, कहने नहीं चाहिए दिल्ली वाला मैं, बट ये पूरा न्यूज पेपर आर्टिकल आया है कैसे मोड ऑफ ऑपरेंडी है, क्या है, कैसे पुरानी व्हीकल को लेते हैं, परचेज करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, उसकी क्लेम कैसे रेज करते हैं, ऑल द थिंग्स। सर ये आर्टिकल से आपको सीखने को बहुत मिलेगा, आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन में बहुत हेल्प मिलेगा। बहुत सवाल, जितना सवाल पूछेंगे आपकी सोल्यूशन मिलेगा, जितना सवाल आप पूछेंगे। इस आर्टिकल को नेट से डाउनलोड करके जरूर एक बार पढ़िएगा। इसी 4 सितंबर का ये आर्टिकल है, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया का है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज है। मैंने ग्रुप में भी डाला था, आई डोंट नो किसी देखा नहीं देखा। फ्रॉड हर तरफ से होता है, पर ये है कि आप इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। दूसरी, इन्वेस्टिगेशन करके आपके पास लीगल राइट है कि नहीं है। दूसरी, लीगल राइट अगर नहीं है तो उसका ऑल्टरनेट क्या है। 3 सॉल्यूशन जो मेरे समझ में आता है। पहला, हम एक अपनी पोर्टल लॉन्च करके उसके अंदर रजिस्ट्रेशन लें, ट्रेनिंग दें, कोड यूज करें, इंश्योरेंस के साथ बैठते हैं क्लेम वालों के साथ कि हमने ऐसे प्रोसेस किया, उनकी कुछ इनपुट हो ताकि इंश्योरेंस इंडिविजुअल का नाम डिस्क्लोज ना हो, ताकि वो सिक्योर रहे। पहला चीज, जो भी इंश्योरेंस जैसे इन्वेस्टिगेशन कंपनी छोड़ के दूसरी इन्वेस्टमेंट चला जाता है तभी उसका कोड यूज हो, जब भी वो लीगल फंसे तो गलत है, अगर गलत किया है तो। उसके बाद डेटा लेके हम आईआरडी में अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसे खास करके इंश्योरेंस इंडस्ट्री को लीगलाइज करने के लिए एटलीस्ट एक पार्ट में अगर आपका से थप्पा लग गया कि आप लीगल हो तो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है फ्यूचर के लिए। सर मैं आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहूँगा। जी सर। हमारा एआईडी का जो पोर्टल है वो आप सामने देख रहे हैं जी। इसमें सबको कोड दिया गया है, उसको आप आईडी कह लीजिए या कोड कह लीजिए। एआईडी 001, एआईडी 002 ऐसे कोड दिए गए हैं जिसके नाम जो मेंबरशिप के रिस्पेक्टिव हैं। अभी इसमें हमने देखिए हमने पूरा इसका लाइब्रेरी बनाया हुआ है। लाइब्रेरी के बाद में हमने खोया पाया बनाया हुआ है कि जो चीज़ें ढूंढ जाती है, जो मिल जाती है। मिसिंग पर्सन्स का इसमें हमने इंफॉर्मेशन डाला हुआ है। जो चोरी की गाड़ियां हैं उसका हमने इसमें डाटा डाला हुआ है। तो ऐसे ये हमारे पास ऑलरेडी पोर्टल है और वो सबको अवेलेबल है जो इसके मेंबर है। और अगर आपको पूरा कोई इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए ऑल ओवर इंडिया में कि कोई कहाँ प्रैक्टिस कर रहा है तो उसका भी डाटा यहाँ पर है कि अगर आपको कहीं इन्वेस्टिगेशन चाहिए, जैसे आप बॉम्बे में हैं, आपको इन्वेस्टिगेशन कोई असम में कराना है, कोई बिहार में कराना है, कोई यूपी में कराना है, तो वो हमने यहाँ पे पूरे इन्वेस्टिगेटर्स का जो हमारा नेटवर्क है वो हमने दिया हुआ है। अभी इसमें कई इन्वेस्टिगेटर्स ऐसे हैं जिनके पास पूरा इन्फॉर्मर नेटवर्क है। तो अगर आप किसी चीज़ जैसे कंसाइनमेंट चोरी हो जाता है, कोई बहुत बड़ा ज्वेलरी शॉप तोड़ दिया जाता है, कोई डायमंड चोरी हो जाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास इसका पूरा इन्फॉर्मल नेटवर्क है। अगर आप उस इन्वेस्टिगेटर को अगर अप्रोच करते हैं तो आपको पूरा वो नेटवर्क से इन्फॉर्मेशन जैसे पुलिस जैसे इन्फॉर्मेशन देता है वो है। हमारे पैनल पे कई ऐसे जिसको कि आप एथिकल हैकर कहिए या कुछ भी कहिए या उसको मैं आईटी सर्विस प्रोवाइडर भी कहता हूँ, वो अगर जैसे पुलिस हमारा सर्विसेज लेता है तो उसके ऑफिसर कभी कभी हमको ना सीडीआर भी दे देते हैं कि आप ये एनालाइज करके हमको बताओ कि इसमें चोर कौन हो सकता है या रॉबरी होता है, तो वो हमको बताते हैं कि आप सीडीआर लो। वो हमको थ्रू प्रॉपर चैनल सीडीआर देते हैं और बोलते हैं कि आप इसको एनालाइज करो, क्योंकि हमारे पास वो टैलेंट नहीं है। तो हमारे पास वो ऐसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी हैं जो पूरा सीडीआर को एनालाइज करते हैं, एचडीआर को करते हैं जिसको कि हम रफ लैंग्वेज में डम डाटा बोलते हैं। वो डम डाटा को एनालाइज करके हमको बताते हैं कि ये पॉसिबल आदमी हो सकता है। तो ये डाटा जो है हम वो पुलिस से शेयर करते हैं, फिर उसके आगे का जो एक्शन पार्ट होता है वो पुलिस का होता है।
सो हम लोग ये जो इन्वेस्टिगेटर्स का हमारा नेटवर्क है जो पोर्टल पे भी अवेलेबल है, ये हम लोग पुलिस अथॉरिटीज को भी हेल्प करते हैं उनको उस लॉजिकल एंड तक पहुंचने के लिए। तो जैसे आपने बताया ना, कोड होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। और इसमें हमने कुछ रिपोर्टिंग के फॉर्मेट्स भी दिए हुए हैं कि पूरे इंडिया में अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं पूरे, तो सबका एक यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ रिपोर्टिंग होना चाहिए, ये भी हमने किया हुआ है। तो एवरी डे इफ यू गो थ्रू दिस पोर्टल यू विल फाइंड इट। और सजेशंस आर आल्सो इनवाइटेड कि अगर इसमें हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं तो उसके लिए ओपन है। और ये सब जो भी उसके मेंबर हैं उसके लिए ये एक्सेसिबल है, इतना सारे इंफॉर्मेशन। सर मैंने इसको देखा है, इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत बढ़िया है। ऐसा मुझे कोई डाउट नहीं, मैंने भी इसकी कहीं हेल्प लिया है इन्वेस्टिगेटर के आपके थ्रू। अभी इसमें सर हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स को एक जॉब अपॉर्चुनिटी ये भी है कि समझो बॉम्बे से कोई गाड़ी चोरी हुई है, उसने यहाँ डाटा हमने अपलोड कर दिया, अगर वो गाड़ी दिल्ली के किसी पुलिस स्टेशन में खड़ी है या कहाँ उसको लावारिस मिली है और वहाँ का इन्वेस्टिगेटर जो है इस पोर्टल में मैच करता है और गाड़ी उसको ट्रेस हो जाता है, तो उसको हम लोग उसका रेम्यूनरेशन भी देते हैं। जो इन्वेस्टिगेटर वहाँ ट्रेस करता है तो उसका रेम्यूनरेशन वगैरह जो भी उसका फीस होता है वो हम लोग है ना थ्रू जो प्रॉपर चैनल है, जो गाड़ी का मालिक होगा या पुलिस ऑफिसर होगा या और कोई कंसर्न जो स्टेक होल्डर है उसमें उस चोरी में, उससे हम लोग लेके उसका फीस भी पे करवाते हैं। So this is also providing an opportunity to all the investigators to use the network and technology of internet to find out the things which are जो कि पुलिस के आपने हर पुलिस स्टेशन में देखा होगा 100-200 गाड़ियाँ ऐसे ही पड़ी रहती है, सड़ती रहती है, जिसका कि कोई माय बाप ही नहीं आता है। तो इस पोर्टल से हम लोग वो गाड़ियाँ को ट्रेस करवाने का काम करते हैं। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इसमें इंश्योरेंस कंपनी है, क्योंकि उनका पैसा स्टेक पे है। तो वो इंश्योरेंस कंपनी से जो फीस आता है, तो जिसने उसका लिंक दिया है कि यहाँ पे ये गाड़ी खड़ा है, उसको हम लोग वो फीस पेड करवाते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है के लिए अगर इस पोर्टल को वो फॉलो करते हैं। सर मेरा इसमें थोड़ा सा ये है, ये जो पोर्टल में अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये किसी इन्वेस्टिगेटर दूसरी इन्वेस्टिगेटर हेल्प करने के लिए या लेने के लिए कर रहा हूँ। मेरा जो सिस्टम मैं डेवलप करना चाहता हूँ, जैसे आप बैंकिंग सिविल सिस्टम में आप लोन लेने जाओ, आपके कोड है, आप उसके अंदर सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। आप किसी बंदे की पूरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, सेम उसी सेगमेंट में उसी टाइप पे इन्वेस्टिगेटर बनाया जाए। इसे कोई क्लेम करता है कि मैं 50 इन्वेस्टिंग करता हूँ, 100 इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, उसको साथ की पता चल जाएगा। दूसरी चीज, इंश्योरेंस कंपनी से आप पता चलेगा कि इन्वेस्टर अच्छा है बुरा है, उसके लिए रैंकिंग कर सकते हैं, उसकी कोड है ए टू जेड नंबरिंग कर लेंगे। तो अभी आपको पता होगा कि जैसे पुलिस पुराने टाइम पे हर आरोपी का या हर कल्प्रिट का एक डोजियर होता था उनका। जी आज भी है सर, आज भी है, लेकिन अभी वो ऑनलाइन है। हाँ मतलब तो फॉरवर्ड क्योंकि ऑनलाइन जमाना है, हमारे पास भी वो डोजियर्स है, लेकिन हम लोग अभी तक उसको अपलोड नहीं किया है, क्योंकि अभी तक हम लोगों को उसका हम श्योर नहीं है कि कहीं उसका मिसयूज ना होने लगे। सर उसका तरीका है, देखो एआई सिस्टम आ गया है, सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग हो गई, उस पोर्टल के अंदर जो भी डिटेल होगा सब 100% एक्सेस कर पाएगा। मैं आपको कहता हूँ हमारे पास हर मॉडल ऑपरेंडी, जैसे गाड़ी चोर का अलग मॉडल ऑपरेंडी होता है, एचपीटी करने वाले का अलग मॉडल ऑपरेंडी होता है, रॉबरी करने वाले का अलग अलग होता है। तो उसमें सब में हम लोग कितने आरोपी काम कर रहे हैं रीजन वाइज, उसका सबका हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन अभी वो हम इसमें लोड नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज पैरेलली एक पुलिस अथॉरिटीज के साथ में पहले हमको उसको ऑथराइज करवाना है। नहीं सर, मेरा जो रोल है मैं इसको अपने किसी को नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी इंश्योरेंस जो इन्वेस्टिगेटर है उनकी एक प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ जो कंप्लीट सीक्रेट रहेगा, सिर्फ कोड एक्सेस होगी या इंश्योरेंस कंपनी हो। इवन जो बंदा, मैं आजकल बहुत सारे फ्रीलांसर आ गए, मैं फ्रीलांसर में देख लो, एक बंदा मुंबई से गुजरात में केस ले रहा है, पटना से ले रहा है, जयपुर से ले रहा है, सब जगह ले रहा है, ठीक है। वो किसके साथ क्या चीटिंग कर रहा है अलग बात है, बट उसकी प्रोफाइल चेक करने वाला दूर से, क्योंकि मैं 5,000 ले रहा हूँ, मुंबई से जाके जयपुर में केस नहीं कर सकता, नहीं अगर लोगों को पकड़ता उसको 2,000 दे देता, बट उस केस को चेक करने का हमारा सिस्टम नहीं है। ये जो मैं सिस्टम बता रहा हूँ, इससे सिर्फ इन्वेस्टिगेटर की प्रोफाइल होगी, बस और कुछ नहीं।
That's a very good idea, sir. We should take you over that. Well, my dear friends, I'd like to take this opportunity to ask you a question. Is that all right? Anyone has questions, I would like to. Can I ask you a question, please? On your How many of us here are members of Association of Investigators and Detectives? Thank you very much. Those who have not raised your hands, I request you to become members in our organization so that you can take a lot of advantages by visiting and getting the login ID on our website where you can use templates and various other issues. And also, for example, now the gentleman here on the stage was saying that if you do not have office outside Delhi, he has office in Delhi. And one more gentleman who is a member of our organization, I would not like to take the name, his offices are there in Delhi. But he had some work here in Bangalore, and he directly called me and he said, Shankar, मुझे like HR here, मुझे कर सकते हो क्या? And I had a free boy on that day, and I put him on work, and that work was done within one day. Similarly, we can use your offices, you can use our offices. That is the beauty of networking. That is the beauty of networking, very rightly said. And our membership fees are very, very minimum. It is not 10,000, 15,000, 50,000, nothing like that. It is only 2,500 rupees per year. And the first year it will be 250 rupees extra, which is for registration. So first year it will cost you 2,750 rupees, and the subsequent years it will be 2,500. I request you all to kindly contact our help desk, which is Mr. Tushar or myself and Mr. Desai, Ashish, and Madam Siddhira More, so that you can also become part of our organization. And the tea is almost ready, and we would like to take 2-3 questions for the gentleman here on the stage, please. Mike is there with me, you need to raise the hand to ask questions. This membership, I'm here representing from on behalf of KSSA members from private security agency. So the membership can be taken by the individual or by the company also. You can also be a member.